अच्छा, आज हम ये बुक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस। इसका नाम क्या है? क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस। ये बुक है शक्ति गावन का। कैलिफोर्निया का ये ऑथर है, कैलिफोर्निया का शक्ति गावन। ये और ये इसका बैक साइड है। ये इसकी फोटो है शक्ति गावन की। ये लेडी एक बेसिकली शक्ति गावन जो है ना, इसका सेकंड एडिशन है जो हम पढ़ रहे हैं। दिस इज सेकंड एडिशन। बेस्ट सेलर बुक है। 2 मिलियन कापीज की सोल्ड हुई हो चुकी है। तो यूज द पावर ऑफ योर इमेजिनेशन टू क्रिएट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। ये कह रहा है कि अपने इमेजिनेशन को, पावर को यूज करो, जो आप क्रिएट करना चाहो कर सकते हो। सो इसमें ये जो है इसके कैसेट भी हैं। कह रहा है कि इसकी कैसेट भी है जो कि वो आप सुन सकते हो। और क्रिएटिव रियलाइजेशन जो है, ऑथर कह रहा है क्रिएटिव रियलाइजेशन जो है ना, ये वर्क बुक है लिविंग इन द लाइट। इसकी और बुक है लिविंग इन द लाइट, रिफ्लेक्शन इन द लाइट, डेली थॉट्स एंड अफर्मेशंस, अवेकिंग a daily guide to the conscious living, return to garden, meditation, the path of transformation, the four level of the healing, creative true prosperity. Developing intuition, living in the light, creative realization, meditation, creative realization, developing intuition, meditation with Shakti Gavan, relationship as a mirror, the path of the transformation, the four level of the healing, creative true prosperity. Video creative realization workshop, living in the light, the path of the transformation. So creative realization जो है, use the power of your imagination to create what you want in your life. Shakti Gavan. नटराज पब्लिशिंग ये बुक उसने की है। सो बहुत ही अच्छी बुक है। बड़ी इसमें आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा। आप जो भी लाइफ में चाहोगे वो आप क्रिएट कर पाओगे। और उसके बैक साइड पे लिखा हुआ है कि क्रिएटिव रियलाइजेशन जो है ना, वो यूजिंग मेंटल इमेजरी, बेसिकली मेंटल इमेजरी यूज करनी है इन अफर्मेशन टू प्रोड्यूस पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। इट इज बीइंग सक्सेसफुली यूज इन द हेल्थ में यूज होती है, एजुकेशन में, और किस में भी आप यूज करते हो। ये बिजनेस में करना चाहो, एथलीट एंड एनी क्रिएटिविटी, अपनी हेल्थ को बढ़ाने के लिए, अपनी एजुकेशन को, अपने धंधे को, एथलीट को। विथ 2 मिलियन कापी जो है इसकी सोल्ड हो चुकी है यूएस में, एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 5वीं लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। दिस pioneering bestseller and a perennial favorite helped launch a new movement in the personal growth field when it was first published more than 20 years ago. ये 20 साल पहले छपी थी। ये पर्सनल जो डेवलपमेंट इंडस्ट्री है ना, उसने बड़ा नाम किया इस बुक ने। नाउ इट हैज़ बीन कम्प्लीटली रिवाइज्ड एंड अपडेटेड। ये आपके पास हाथ में जो एडिशन है। क्रिएटिव रियलाइजेशन कंटेन्स, इसमें मेडिटेशन भी दी गई है, कुछ एक्सरसाइज दी गई है, कुछ टेक्निक्स दी गई है दैट कैन बिकम पार्ट ऑफ योर एवरीडे रूटीन टू इंक्रीज योर पर्सनल मास्टरी ऑफ लाइफ। आप डेली अप्लाई करो अपनी रूटीन में और लाइफ को मास्टर करो। शक्ति गवन जो है ना, क्लासिकल गाइड टीचेस मेथड दैट आर प्रैक्टिकल एंड इजी टू इनकॉर्पोरेट इनटू डेली लाइफ में अप्लाई करो। दीज स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक्स कैन हेल्प यू, आपको मदद करेंगे। यूज द पावर ऑफ योर इमेजिनेशन टू क्रिएट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। इमेजिनेशन की पावर को यूज़ करो। चेंजेस नेगेटिव हैबिट्स पैटर्न को ख़त्म करो। इम्प्रूव, अपनी सेल्फ स्टीम बढ़ाओ। रीच योर करियर गोल्स को आगे करो। इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी बढ़ाओ। डेवलपिंग क्रिएटिविटी बढ़ाओ। इंक्रीज वाइटलिटी एंड इम्प्रूव योर हेल्थ बढ़ाओ। एक्सपीरियंस डीप रिलैक्सेशन बढ़ाओ एंड मच मोर। शक्ति गवन जो है ना, वो ये पायनियरिंग फोर्स है इन द वर्ल्ड कॉन्शियसनेस मूवमेंट में। एक फोर्स है पायनियरिंग। हर अदर बुक्स इंक्लूड इसके लिविंग इन द लाइट में भी एक बुक इसकी है, रिटर्न टू द गार्डन में भी है इसकी बुक, द पाथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन की बुक भी है, एंड क्रिएटिंग ट्रू प्रॉस्पेरिटी की बुक भी है। फॉर नियर बाय 20 years शी वाज लेड सेमिनार थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये पूरी 20 साल से ये जो है ना,
पूरे वर्ल्ड में सेमिनार शक्ति कवन करती है, लेडी है ये हिसाब से। अभी इस बुक में जो है ना, इस बुक में जो है वो पहले पब्लिशर प्रीफेस दिया गया है, इंट्रोडक्शन टू द सेकंड एडिशन, चैप्टर दिया गया है, एक्नॉलेजमेंट दी हुई है, लेटर टू रीडर बी का चैप्टर है। पार्ट वन जो है इसमें बेसिक ऑफ द क्रिएटिव है, उसमें व्हाट इज क्रिएटिव क्या है, हाउ क्रिएटिव कैसे काम करती है, सिंपल एक्सरसाइज टू क्रिएटिव कौन कौन सी है, इट्स इम्पॉर्टेंट रिलैक्स लाजमी है होना, हाउ टू विजुलाइज कैसे विजुलाइज किया जाए, 4 स्टेप्स हैं फॉर इफेक्टिव क्रिएटिव के लिए, 4 स्टेप्स हैं। क्रिएटिव वर्क्स ओनली फॉर गुड, अच्छे के लिए काम करना है, बुरे के लिए नहीं। अफर्मेशंस है इसमें, स्पिरिचुअल पैराडॉक्स है। पार्ट टू यूजिंग क्रिएटिव कैसे यूज़ करते हैं, मेकिंग क्रिएटिव पार्ट ऑफ योर लाइफ बनाओ उसको, बीइंग डूइंग एंड हैविंग है। 3 नेसेसरी एलिमेंट्स है इसमें, कॉन्टेक्टिंग योर हायर सेल्फ है, गोइंग विथ द फ्लो से चलना है, प्रॉस्पेरिटी है, एक्सेप्टिंग योर गुड को एक्सेप्ट करो, आउटफ्लोइंग और हीलिंग। और इसमें पार्ट 3 जो है मेडिटेशन अफर्मेशन के लिए बताया गया है, ग्राउंडिंग योर सेल्फ एंड रनिंग, एनर्जी को रन करो, आप ओपनिंग द एनर्जी सेंटर्स को ओपन करो, क्रिएटिंग योर सेंचुरी, मीटिंग योर गाइड, पिंक बबल टेक्निक्स भी है, हीलिंग मेडिटेशन भी है, इन्वोकेशंस भी है, वेस्ट टू अफर्मेशंस भी है। इसमें जो पार्ट 4 दिया गया है वो स्पेशल टेक्निक है, क्रिएटिव नोटबुक है, किलरिंग है, राइटिंग अफर्मेशंस है, सेटिंग गोल्स है, आइडियल सीन्स हैं, टीचर्स मैप्स हैं, और हीलिंग एंड ब्यूटी है, हेल्थ एंड ब्यूटी है। क्रिएटिव ग्रुप्स में करो तो बेहतर है, क्रिएटिव रिलेशनशिप को फ़ायदा देती है। और 5वां जो पार्ट है वो लिविंग क्रिएटिवली, अपनी लाइफ को क्रिएटिविटी में लिव करो, क्रिएटिव सर्कमस्टेंसेस पैदा करो, डिस्कवरिंग और हायर पर्पस डिस्कवर करो, योर लाइफ योर वर्क ऑफ आर्ट, आपकी लाइफ जो है आपका आर्ट वर्क है। अबाउट द ऑथर के बारे में बताया गया है, रिकमेंडेशन रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है। अभी इसमें जो पहला है वो पब्लिशर ने प्रीफेस में सेकंड एडिशन के बारे में क्या बताया है पब्लिशर ने। तो 77 में जो है ना, शक्ति कवन जो है मेरा माय फ्रेंड शक्ति कवन एंड आई, हम दोनों ने अपना समाल पब्लिशिंग इंटरप्राइज शुरू किया था 77 में। वी हैड नो कैपिटल, हमारे पैसा नहीं था, ऑलमोस्ट नो एक्सपीरियंस भी नहीं था, बट आफ्टर ईच स्मॉल स्टेप, हम जब स्टेप उठाते गए, द नेक्स्ट स्मॉल स्टेप्स बिकम ऑब्वियस, एक उठाया हमने नेक्स्ट ऑब्वियस हो गया। आई फील वी आर लेट इनटू द पब्लिशिंग बिजनेस by some higher powers, or whatever you want to call it, far beyond either one of us। 1978 में शक्ति कवन ने एक अपनी बुक लिखी, क्रिएटिविलाइजेशन। वी इनिशियली पेरेंटेड, हमने 2000 कापी उसकी छापी। वी हैड टू बारो मनी टू पे द प्रिंटिंग बिल, हमने पैसे उधार लिए प्रिंटिंग बिल के लिए। डोंट रिकॉल दैट वी स्पेंड एनीथिंग एट ऑल ऑन द प्रमोशन। I don't think we sent out even one review copy, but the print run sold out। जो हमने प्रिंट किए सोल्ड हो गए, quickly and purely through the word of mouth। जैसे word of mouth है, ऐसे जल्दी ये कापियाँ इसकी जो है सोल्ड हो गई। बुक सेलर kept telling us, बुक सेलर ने बताया कि people would come in, people आते हैं, बाय करते हैं, कापी रिटर्न a few days later and want 5 or 10 copies to give to their friends। The book initially sold itself, something I attribute to शक्ति के बारे में क्लियर ये है कि ब्यूटीफुल राइटिंग है, उसकी स्टाइल है, एज वेल एज द सॉलिड कंटेंट ऑफ द बुक, कंटेंट भी सॉलिड है। इट वाज काइंड ऑफ द बुक पीपल वांटेड टू रीड एंड रीड, ऐसी बुक है जो आपको पढ़ने में मज़ा देगी। द काइंड ऑफ द बुक पीपल cherished for everything it had given them। It was the rare kind of book that helped people to make wonderful changes in their life। आपकी लाइफ में wonderful changes लाएंगी। So we started to get enthusiastic and later from the readers very soon after publications। रीडर ने हमको लेटर भेजे जब हमने ये बुक पब्लिश की। वन ऑफ माय फेवरेट ब्यूटीफुली समन्ड अप टू फीलिंग ऑफ द ग्रेट मेनी रीडर्स, मैंने उसमें ये डाल दिया है। अदर सेल्फ हेल्प बुक आई हैव read have made me feel as if someone was pointing a finger at me and telling me
This is how it is. But Shakti Gavan took me by the hand, led and me into the beautiful garden, and handed me a bucket of flower मुझे दिया, one at a time, quietly, gently, and with great caring. Thank you for beautiful book. तो ये book बड़ी beautiful है. Creative Realizations has now sold more than इसकी तकरीबन 3 मिलियन से जिन्हें 3 लाख कापी सोल्ड हो चुकी हैं अमेरिका में एंड हैज़ बीन प्रिंटेड इन मोर देन 25 फॉरेन एडिशंस लैंग्वेज में वाह 25 लैंग्वेज में छप चुकी है. द बुक लॉन्चेस शक्ति's career as an internationally known and loved speaker. बुक जो है इंटरनेशनली नोन है and वो उसको स्पीकर को प्यार करते हैं सेमिनार्स लीडर से. इट लॉन्च्ड माय करियर एज अ पब्लिशर एज वेल. The book has shown us both how to visualize and create success. कैसे उसको visualize करें, कैसे उसको create करें. And I am eternally grateful that Shakti had the vision and courage to write it. तो बड़ी बात है कैसे उसका vision ने उसने write लिखा. It is my hope and prayer that reading creative lesson पढ़ने से क्या होगा will help you create exactly the kind of life you want. अब जो चाह रहे हो आपके सामने आ जाएगी. So that यू ट्रूली विल बी हैप्पी. आप खुश हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, रेडियंटली हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, फील्ड विद आपके प्यार आएगा, जॉय आएगा, क्रिएटिव एनर्जी आएगी, क्रिएटिव एनर्जी आएगी. इट इज़ द प्रॉमिस ऑफ द बुक एंड इट हैज़ बिन प्रूवन. ये प्रॉमिस है बुक का, ये साबित हो गया है ओवर एंड ओवर दैट द बुक डिलीवर्ड इट्स प्रॉमिस. बुक आपका प्रॉमिस पूरा करेगा. ये बुक पढ़ने से क्या होगा, आप हैप्पी हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, रेडियंटली हेल्दी हो जाएंगे, आपके आप में प्यार आएगा, जॉय आएगी और क्रिएटिव एनर्जी आएगी. ज़बरदस्त यार ये. अभी इसका ये चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू द सेकंड एडिशन. It's hard for me to believe that it has been so many years since Creative Realization was first published. काफ़ी साल हो गए, अभी ये सेकंड एडिशन है. At the time I was 30 years old. मेरी उम्र 30 साल थी. Just in the process of discovering my life's work. For a number of years I had been an active seeker था. मैं dedicating my life to exploring the Eastern philosophy and Western psychology में इसको explore कर रहा था in an attempt to discover the deeper meaning and purpose of my life. लाइफ की मीनिंग क्या है और मेरा पर्पस क्या है. So certain ideas, मेरे टेक्निक्स जहन में आए, मैंने सीखे, I learned were in fact having a profound effect on my awareness and my way of living. काफ़ी आइडियाज मेरी लाइफ को अवेयर किया, मेरे लाइफ को लिविंग स्टाइल को चेंज किया. I am the kind of the person who once I discover something meaningful simply cannot help telling everyone who is willing to listen. So I found myself beginning to counsel people and lead small groups and workshops. मैंने काफ़ी वर्कशॉप किए teaching the concept and exercise that were helping me solve my personal problem and expand my awareness. मेरी बढ़ गई, मेरे problem solve हुए. It occurred to me that it might be a good idea of to write these things down in the little book that I could make available to my student. As I was writing the book, जब मैं लिख रहा हूँ, I experienced alternating waves of creative enthusiasm and self-doubt, thinking, who am I to write a book telling people how to find great happiness and fulfillment in life? So, I am certainly no expert. My friend Marin Ellen helped me get through the rough spots, encouraging me to stop worrying about it and just focus on my creative process. अपने creative process को focus करें. We decided to publish the book ourselves, even though we had very little knowledge and published and even less money. कम थे पैसे. Somehow we managed to get the हमने पैसे मैनेज करवाए and there are few bookstores को ये काफ़ी भेजी. The rest in the history. People seem to love the book, sold by word of mouth. Gradually over the next few years became a bestseller बन गई है and continues to be very popular हो गई all over the world. पूरी दुनिया में I think one reason for its popularity that is short, simple and practical. ये बिल्कुल simple है, short and practical and has technique that can begin using immediately and effectively. आप टेक्निक यूज करो, आप ऐसा करेगी जल्दी. It has been extremely satisfying to receive the thousands
telling me how much this book has helped people. मुझे लेटर आए काफ़ी लोगों को this book ने help की sometimes serious problem. I am grateful to be given the opportunity to contribute in this way. My work has blossomed night along with the book. For many years, I have been leading workshop all over the world. मैंने काफ़ी वर्कशॉप कर रही हूँ and I have written and published several काफ़ी मैंने other books भी published की. Creative realization helped me find my path in life just as it has helped others. मुझे भी उसने ज़िंदगी में फ़ायदा दिया जैसे दूसरों को दिया. The time has come for a revised edition. I have made literally few changes. उसमें कुछ changes नहीं लाई है. Simply trying to clarify certain points मैंने clarify किए and deepen certain concept and generally update it all. So if you are already familiar with the first edition, I hope you enjoy the changes. If this is your first experience with creative realization, may it help you create all that your heart and soul desires. तो ये चैप्टर पूरा हो गया.